Dear students, welcome to our today's special session. And today's session is ACCA Jobs per Charcha. And it's not about only ACCA Jobs per Charcha. Actually, from last couple of months, I was getting queries that, ma'am, we want knowledge about opportunities when we are from the commerce background and when we are freshers and when we have some level of experience. So today I have a very special guest who is having expertise in both Big Four and other companies. So our guest is Miss Rachna Sani Kamra, and she is a qualified chartered accountant as well as member of ACCA body. She is working as a manager in accounting advisory practice of Pirate Consultancy. Earlier, she was working in EY in accounting and advisory for good 4 years, and from now, last 2 years, she is at Pirate. Welcome, Rachna. Thank you so much, Palak. Thank you so much for the warm welcome. So, how are you, Rachna? I'm good. How are you doing? Yeah, great. So, first of all, thank you for being here and helping me and my audience for this discussion. Sure, sure. So now, Rachna, as you have expertise in industry and you have helped multiple students in grabbing job opportunities in your past experience. So today our discussion is about job opportunities and related areas. So are you ready for certain questions? Of course, Palak. Sure. Okay, so Rachna, our today's first question is that what are the current trends and how they are shaping the way the companies operate today? So, Palak, if I talk about current trends in the accountancy field, one thing which is very much in trend right now is automation and AI. बाकी इंडस्ट्रीज में भी जिस तरीके से ऑटोमेशन एआई आजकल आ गया है वैसे सिमिलरली इट्स इन द अकाउंटिंग इंडस्ट्री एज वेल. सो क्या होता है कि जो रेगुलर टास्क हैं रिपोर्ट जनरेशन के हो गए बुक कीपिंग के टाइप के टास्क हो गए वो सारे आजकल ऑटोमेट हो जाते हैं. तो इससे क्या होता है कि जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है दे कैन फोकस ऑन अदर स्ट्रेटेजिक एरियाज. अगर इसके अलावा देर आर अदर ट्रेंड्स विच आर ईएसजी हो गया डेटा एनालिटिक्स हो गया. ईएसजी तो आई थिंक हमारे एसीसीए के सिलेबस का भी पार्ट है एक Yeah, इम्पॉर्टेंट. तो आजकल काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जिनको ईएसजी के ऊपर भी रेगुलेटरी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है. ठीक yeah. है, तो एक वो चीज़ है जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है. एंड अदर देन दैट आई वुड ऑल्सो से जैसे मैंने कहा डेटा एनालिटिक्स हो गया. तो आजकल क्या होता है कि बहुत इजीली डेटा मैनेज हो जाता है बट उसको समझने के लिए अलग अलग टूल्स आते हैं. तो Yeah. आई वुड advise your students as well ki once they are done with their degree or whenever they are available whenever they have certain free time तो वो इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं where they can learn courses on Microsoft Excel or some data analytic tools. So I would advise that for your students from my end. Yeah. Okay, so great advice, and yes, that's true. These topics are part of our ACC curriculum as well, and nowadays, not only ACC curriculum, other foreign or international based courses are also incorporating these types of areas in their syllabus area, and that's why I personally feel that they are very good and we need to be updated, okay, accordingly. So, yes, our next question is what is the best approach for candidates, especially when they are freshers, to secure a job in today's competitive market? And this is one of the most important questions which students ask me on a daily basis. So Palak, here what I would advise your students is to stay updated. ठीक है, अब जैसे हम लोग भी आईएफआरएस की तरफ शिफ्ट हो चुके Right. हैं. देर आर न्यू टैक्स रेगुलेशंस विच कीप ऑन कमिंग अप. तो अगर आप टैक्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपको उनके सारे रेगुलेशंस के अपडेट्स के बारे में थरो होना चाहिए. बिफोर Correct. अप्लाइंग अ जॉब व्हाट आई वुड एडवाइज योर स्टूडेंट्स इज दैट कि आप उस जॉब की डिस्क्रिप्शन पढ़ो. गेट टू नो अबाउट दैट जॉब. आर यू रियली इंटरेस्टेड और नॉट? क्योंकि क्या होता है कि जैसे बिग फोर हो गई या कोई और एमएनसी हो गई दे हैव सेपरेट टीम्स. वन इज वर्किंग ऑन एडवाइजरी रिस्क एडवाइजरी अकाउंटिंग एडवाइजरी देन देर आर टैक्स एडवाइजरीज देन ऑडिट हो गया. तो आपका किस में कहाँ पे इंटरेस्ट है फर्स्ट गेट टू नो दैट अबाउट योर सेल्फ. एक बार वो पता चल गया उसके बाद गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू.
आई वुड ऑल्सो से कि जैसे इंटर्नशिप्स वगैरह की अपॉर्चुनिटीज होती हैं तो वो लोग ग्रास्प करते जाएं। ठीक है, जैसे जैसे आपको अगर कोई वॉलंटरी वर्क की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि क्या होता है कि जितना आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा उतना उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा, दे विल गेट टू नो कि काम करते कैसे हैं, व्हाट इज दी वर्क कल्चर, बिकॉज स्टेपिंग इनटू फ्रॉम स्टडिंग टू गेटिंग इनटू अ जॉब, तो वो ट्रांजिशन उनके लिए इजी हो जाएगा। Correct, correct. Absolutely agree. Now, this is again a very great advice, and again, students need to understand this issue very well. That is, they need to update themselves. They need to learn certain skills. So now, if we are discussing about skills, so now, how someone prepare a compelling CV that stand out to recruiter. Because see, I personally feel that you are not going there. खुद से नहीं हम जा रहे हैं, आपका सीवी पहले वहां पर पहुंच रहा है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स कि यस कि आपको रिप्रेजेंट करने वाला होता है आपका सीवी. सो हाउ द सीवी राइट। शुड बी प्रिपेयर्ड. सो आई वुड से कि जब आप सीवी प्रिपेयर करोगे तो उसको काफ़ी कंसाइज रखो, डोंट गेट इनटू एक्स्ट्रा डिटेल्स, बट रेलेवेंट डिटेल्स रखो उसमें, कि आपने कहीं पे इंटर्नशिप करी है, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स करी हैं अपनी, जैसे कि आई वाज सेइंग कि कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लिए हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस लिए हैं, तो उन सारी चीज़ों को मेंशन करो। एक यहाँ पे आई वुड गिव वन टिप इज दैट क्या कर सकते हैं, जैसे वेन एवर यू अप्लाई फॉर अ जॉब देर इज अ जॉब डिस्क्रिप्शन, तो आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ अपना सीवी मैच करो। जहां जहां आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स लग रहे हैं कि आपके पास कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, या आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स डाल सकते हो जो कि एक एचआर का सॉफ्टवेयर कैच कर लेगा, वो सारे कीवर्ड्स आप अपने सीवी में इनकॉर्पोरेट करो। तो इससे क्या होगा कि आपका सीवी स्टैंड आउट कर जाएगा फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। दिस इज वन थिंग। देन आई वुड से कि जब भी आप अप्लाई करते हो, कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, ये मत करो हाँ. कि आपने एक हर बारी यू जस्ट गो देखी जाएगी वाले एटीट्यूड के साथ। या सो राइट. ऑल्सो स्टडी वेल बिफोर द इंटरव्यू। जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट आपको वो नॉलेज पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा यू कैन रिसर्च अबाउट द कंपनी जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, उसको उस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करके जाओ, इवन इफ यू नो करेक्ट. अबाउट इट सम अपडेट्स, रीसेंट अपडेट्स की उस पर्टिकुलर कंपनी में क्या रिसेंटली हुआ है, उन सब की नॉलेज लेके जाओ। सो इससे क्या होता है कि इंटरव्यूअर के ऊपर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है दैट ओके दिस पर्सन इज रियली इंटरेस्टेड इन द जॉब। तो दिस इज व्हाट आई वुड एडवाइज टू द स्टूडेंट्स बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी इंटरव्यू। Correct, correct, and that's most important. Like sometime I have seen students in the past, because see, I am actively involved with some recruiters to provide the job opportunities to student, and again sending the resume of certain students to recruiters. And बहुत बार क्या होता है कि बच्चे मुझे reach out करते हैं, मैम हमारा सीवी सिलेक्ट नहीं हुआ. When I talk to recruiter, they used to say कि ये तो ऐसे लग रहा है किसी और का सीवी ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है. So they find in a just a minute that yes, what's राइट। going on. तो ये इस बात का तो ध्यान, I personally feel that it's very important. यहाँ पे Now, एक और चीज बोलूंगी पलक मैं कि आप जब भी सीवी भेजते हो, वेन एवर द स्टूडेंट सेंड्स अ सीवी टू द एचआर और किसी भी रेफरल के लिए भी, तो yes. इट्स बेटर कि आप हमेशा उसको प्रूफ रीड करके भेजो। एक एग्जांपल मैं कोट करूंगी, मेरे पास किसी का सीवी आया था, किसी का अटैचमेंट आया था, बट वो अटैचमेंट वाज अ ब्लैंक पीडीएफ फाइल। सो उस टाइप की चीजें ना करो, बिकॉज नो Yeah, वन हैज दैट मच ऑफ टाइम कि आप भी अपना टाइम वेस्ट करो, नो वन yeah, इज गोइंग टू फॉलो अप कि correct. आपका सीवी नहीं आया प्रॉपर, ये वो। सो आई वुड से कि ऑलवेज प्रूफ रीड योर सीवी, प्रूफ रीड योर ईमेल व्हाइल Yeah, बिफोर अप्लाइंग फॉर अ जॉब। correct, correct. Now, the next question is as you were part of Big Four and now you are part of MNC. So yes, what are the growth opportunities for freshers once they enter for Big Four company or MNC? सो पलक, सी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं इन अ बिग फोर और इन एन एमएनसी, बट इट्स हाउ यू ग्रैब इट। ठीक है, तो देर आर ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज वेयर वेर दी एम्प्लॉयज आर गिवन अ चांस टू गो इंटरनेशनल। ठीक है, कुछ secondment अपॉर्चुनिटीज हो गई, देन एवरीथिंग इज सो स्ट्रक्चर्ड इन सच काइंड ऑफ फर्म्स दैट प्रमोशन साइकिल्स अच्छे होते हैं, तो इफ यू आर परफॉर्मिंग वेल यू कैन Correct.
seek promotions quickly. तो वो सारी चीज़ें हैं एंड ऑल्सो देर इज एन अपॉर्चुनिटी, जैसे कि मैंने पहले बोला कि आप अपने आप को स्विच करके भी देख सकते हो. समटाइम्स इफ यूर इन एडवाइजरी यू कैन स्विच टू ऑडिट एंड सी, यू कैन स्विच टू टैक्स एंड सी. तो वो आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा एंड देन stick to that particular field or keep changing. रोटेशन अपॉर्चुनिटीज हो गई, तो इस टाइप की बहुत अपॉर्चुनिटीज बिग फोर्स और एमएनसीज ऑफर करती हैं. अ, एक और अपॉर्चुनिटी मैं बोलूँगी कि यहाँ पे क्या होता है इन फर्म्स में कि यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग. हमेशा Correct. कुछ ना कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे होते हैं, सो यू कैन stay updated, you can learn while on the job. So Correct. that I would say is an added advantage to anyone who's in such a uh, job profile. Yes, and see, I also feel that I am also learner. See, मैं बच्चों को हर रोज पढ़ाती हूँ, and sometimes I feel that कि okay ये कुछ नया हर रोज. I used to teach some same topics, right? And हर सब्जेक्ट के तीन तीन चार चार बैच चलते हैं. But again हाँ, हर बैच में मुझे ऐसे लगता है कि okay I am also learning something new, and I personally feel that कि learning is something good. And if I feel like I'm lucky that I'm into teaching field, because हम एक ऐसी फील्ड में हैं जिसमें हम हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, अपडेटेड ट्रेंड में सीखते हैं. सो एंड अगेन देयर इज definitely. नो एज ऑफ लर्निंग. Right, right. So now next, like as you are into this field, so how do you bring and maintain strong relationship with clients without meeting them since they are in overseas? Because we are seeing that कि आज के डेट में ये overseas clients का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल चुका है इंडिया में, एंड स्पेसिफिकली द एरिया वेयर यू आर लिविंग इन, वहां पे नियर बाय उस एरिया में बहुत सारी आउटसोर्सिंग छोटी छोटी फर्म्स भी आ रही हैं. सो यस, इसलिए व्हाट काइंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आर देयर, एंड कैसा वहां पर काम होता है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पलक. सो इसमें क्या है कि जैसे कि आफ्टर कोविड-19 पीपल हैव बीन वर्किंग फ्रॉम होम. वी हैव, तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें क्या हो गई हैं, वर्चुअल हो गई हैं. उससे पहले भी वी वर वर्किंग ऑन दोज मॉडल्स. तो हम लोग क्या करते हैं दैट वी स्टे इन टच विद आवर क्लाइंट्स so much कि उन मतलब there's that kind of transparency involved while we work. We give them regular updates. हम उनके साथ कुछ पर्सनल टचेस भी ऐड करते हैं, जैसे कि विशिंग एनिवर्सरीज, विशिंग बर्थडेज, हैविंग दोज वर्चुअल इवेंट्स. तो इससे क्या होता है कि एक ट्रस्ट फैक्टर बना होता है विद द क्लाइंट्स एंड दैट रियली हेल्प्स टू गेटिंग मोर बिजनेसेस. So करेक्ट. once we can also seek feedback from them, we can work on those feedbacks. तो हम ये सारी चीज़ों को अपने सारे प्रोसेसेस में इस तरीके से इनकॉर्पोरेट करते हैं कि उनका ट्रस्ट जो है वो हमेशा बना रहता है. एंड दैट इज हाउ वी keep connecting with the overseas clients, which makes things really easy. Sometimes we need to take calls, तो हम वो लेते हैं. We get in touch with them through emails, regular उनको updates करना. Every end of our day we give them an update. We chat with them so that they are updated कि काम कहाँ तक हुआ है, कहाँ से उनको pick करना है. So these things help in building a strong relationship with the overseas clients. ग्रेट, ग्रेट. So now our last question, what advice would you like to give to freshers before applying at MNCs? And See, I guess this is one of the this most is like important question. yeah, so this is like a total conclusion for the whole entire Yeah. session which we just had. तो इसमें ये हो गया कि वन, while they are free they can get into trainings. ठीक है, जैसे ऑनलाइन आप ट्रेनिंग्स ले सकते हो, एक्सेल की हो गई, डेटा एनालिटिक टूल्स की हो गई. इनफैक्ट यूट्यूब पे भी काफ़ी कुछ है अवेलेबल आजकल टू Correct. लर्न. Other than that you can get into certain internships in your free time. वो चीज़ हो गई. उसके अलावा ये हो गया कि बिफोर अप्लाइंग फॉर एन इंटरव्यू यू कैन गो थ्रू योर सीवी, यू कैन स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट लॉज जो आ रहे हैं, क्या लेटेस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हो गई. तो आप बेसिकली स्टेइंग अपडेटेड, रिफ्रेशिंग योर स्किल्स, adding in more value added skills will really help a candidate to stand out from other candidates, and that particular candidate would be preferred. So I would say कि इन चीज़ों पे काम करो and then you'll definitely land up into a good job. Okay. And see, we are discussing about discussion about this thing.
सो और कौन कौन सी एरियाज हो सकते हैं, जैसे कि अगर सपोज इफ आई एम अ फ्रेशर एंड आई वांट टू अप्लाई फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी, तो व्हाट काइंड ऑफ सोर्सेज कुड बी देयर? So, by sources, do you mean like what medium, or you mean यस, what other teams? लाइक व्हाट मीडियम्स लाइक? See, what you can do is the students can get into touch with people, with professionals over LinkedIn. ठीक है, आप क्या होगा कि once you build a network, it will help you get a job. It will help you to stay updated. It will help you to create a network which you can get support from whenever required. तो वो हो गया। आप क्या कर सकते हो, जैसे कुछ जो हमारे इवेंट्स होते हैं, एसीसीए वालों के भी काफ़ी इवेंट्स होते हैं, करेक्ट। ठीक है, वो सारे ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन ज्वाइन इन सर्टेन वेबिनार्स, या जो हमारे वर्चुअल इवेंट्स भी होते हैं, कुछ हमारे ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। यू कैन स्टे इन टच विद योर फ्रेंड्स, जो कि आप ड्यूरिंग योर कोचिंग वगैरह के टाइम बनाते हो, तो इन सब चीज़ों से भी यू लैंड अप इनटू अ जॉब ऑल्सो। देयर आर अदर जैसे those particular platforms like नौकरी, like जॉब प्रोफाइल वाले जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो उनके थ्रू भी होता है। या आप हमारी जैसे कंपनीज के पेजेस फॉलो कर सकते हो। तो आजकल तो लिंक्डइन पे एवरीवन कीप्स पोस्टिंग थिंग्स, सो दैट करेक्ट। विल रियली हेल्प द स्टूडेंट्स टू लैंड अप इनटू अ जॉब। Great. And as we are discussing about these Naukri profile, I also feel that again हम LinkedIn की बात कर रहे हैं, तो मुझे मेरा फर्स्ट जॉब भी है LinkedIn से ही मिला था। आई नेवर अप्लाइड इन दीज पेड एप्स, सो आई डू रिमेम्बर मैंने अप्लाई किया एंड विद इन 10 minutes आई गॉट द रिप्लाई फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड आई वॉज वेरी लकी। जब जब मैंने रिप्लाई अप्लाई किया है, तो हर दिन उसी दिन मैक्सिमम एक दिन के अंदर मुझे काम मिल गया। LinkedIn is a really great platform, Palak, if used in the right way. Yeah. So I guess you solved most of the queries of my student and guys, अगर आपके माइंड में कोई और queries हैं, कोई और questions हैं, तो please इस वीडियो पे कमेंट करिए। And I will be trying to make more videos like these, and I will be trying to connect with you more people like Rachna, and we all will try to support you and to help you in your professional journey. Thank you so much, Rachna, for your valuable time and tips. Thank you so much, Palak, and all the best to all your students. Thank you.